Hello students, in this video we are going to see the prelims paper which I had uploaded 2-3 days before. Today we are going to see the solutions for this prelims paper. Okay, so the first question was complete the following chain. I had already told you all कि आप खुद से करो and you try to solve the paper और फिर I'll just share the answer key with you all. ठीक है, तो today we'll discuss the answer key of the paper. अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू वांट एनी PDF रिगार्डिंग द पेपर्स, प्रीलियम पेपर्स या फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पेपर्स, you can join the Telegram group. The link I'll be sharing in the description box. You can join the Telegram group. The question bank which is provided by Maharashtra government. So that question bank I've already uploaded. All the objectives I've uploaded the answers for it. You can go through it. If any query you can just write down in the comment section. ठीक है, अभी हम we'll just go through the question answers quickly. So the first question is complete the following chain in which you have 3 columns, that is column A, column B and column C. So let us complete them. तो ये आपको कैसे करना है मैंने पहले ही बताया कि देखो अभी यहाँ पे you have 5 रोज. ठीक है, इसमें से सबसे इजी आपको कौन सा लगता है? तो सबसे इजी वाला यू विल डू द फर्स्ट. ओके, तो ईजीएस्ट अगर आपको टूरिज़्म में पता है, टूरिज़्म के बारे में, तो आपको पता है कि टूरिज़्म में क्या है. सो एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता, हंटिंग इज़ नॉट देयर, एज स्ट्रक्चर इज़ नॉट देयर, वीवर्स इज़ नॉट देयर. टूरिज़्म में क्या है? फिर कोंकण है. ठीक है, तो ऐसे सबसे ईजीएस्ट थिंग यू शुड नो. अभी वीवर है ना, वीवर इन कॉलम बी, तो वीवर कॉलम सी में क्या है? पैठनी साड़ीज़. तो वीवर्स का काम क्या है? साड़ी को बनाना. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गिव योर लॉजिक एंड पुट योर लॉजिक इन दिस. अल्टीमेटली जो आपको पता नहीं है, जो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो अल्टीमेटली बच जाएगा एंड दैट विल बी द आंसर. रिमेनिंग थिंग्स विल बी द आंसर्स. ठीक है, सो फटाफट से विल डू दिस. दिस इज कॉलम ए, कॉलम बी. द आंसर फॉर दिस इज व्हाट? ह्यूमन फैक्टर, एग्रीकल्चर एंड चिल्ड्रन, then population composition, then that is age structure, Pyjamas, then tourism is Konkan, Goa, then we have primary occupations, hunting and irrigation, and then we have household industry, weavers and पैठनी sarees. ठीक है, so this is all about the first question. Now next question is identify the correct correlation. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक assertion and reasoning. ठीक है, दोनों को आपको पहले चेक करना है दैट इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग. ठीक है, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. उसके बाद आपको क्या चेक करना है? आर इज़ गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट. ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट? पॉपुलेशन ऑफ द रीजन डज नॉट चेंज. ये सही है क्या? नो, इट इज़ रॉन्ग. पॉपुलेशन इज ऑलवेज चेंजिंग. पीपल आर ऑलवेज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. नेक्स्ट रीजनिंग क्या है? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन. येस, अगर कोई बर्थ होती है या फिर कोई डेथ होती है या फिर लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होते हैं, डेफिनेटली पॉपुलेशन एक तो बढ़ता है, कम होता है, डिपेंड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं लोग. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इज लाइक क्वेश्चन ऑप्शन बी, that is only R is correct. ठीक है, so only R is correct will be the answer because only the second statement is correct, the first statement is false. Let us move ahead with the second one. The humid climate of Mumbai offered great scope for the development of cotton textile industry. So ये हमें पता है कि सबसे बड़ा cotton textile industry मुंबई में है. वहाँ का जो climate है humid, so that climate is very much suitable to convert the cotton into thread. तो थ्रेड जब बनता है ना तो वो ब्रेक नहीं होता है ह्यूमिड क्लाइमेट में. अगर आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्राई एरिया में है या फिर कोल्ड एरिया में है, सो इन सच प्लेसेस क्या होता है कि थ्रेड कॉटन डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रेड इजीली. ठीक है, द थ्रेड स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन. सो दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इंडस्ट्रीज रिक्वायर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. येस, हमें पता है कि सारे इंडस्ट्रीज़ को पानी की ज़रूरत है. You require water in all the industries. This statement is correct. Now if you take into consideration of both the statements are correct.
लेकिन जो आर है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है. You require more water in which type of industries? You require more water in iron and steel industries, ठीक है. या फिर कोई और fruit processing industries, right? So both the statements are correct, but R is not giving the correct explanation of A. Next is third one. In India, industries are found concentrated in few areas are available. So yes, this is true statement. Large amount of area in India is under agriculture, ठीक है. तो बहुत ऐसे थोड़े थोड़े जगह पे आपको डाइवर्सिटी दिखाई देती है कि इंडस्ट्रीज आर सेटअप. एंड रीजनिंग इज व्हाट? इंडिया इज प्रीडोमिनेटली एग्रीग्रियन कंट्री. तो हमें पता है कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन व्हाट? दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. सो इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? एग्रीगियन कंट्री. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है. एंड आर इज गिविंग अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट इज fourth one. In tertiary occupation there is no derivation from the nature and it is as it is in primary activity. तो हमें पता है कि प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है. ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द नेचर. तो वो टर्शरी एक्टिविटी में नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड रीजनिंग क्या है? ओनली सर्विस इज प्रोवाइडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हमें पता है कि टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. सो इन दैट ओनली सर्विस इज प्रोवाइडेड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हाट? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्या है? assertion. Functional regions are not bound by any formal characteristics but by a function. And reasoning क्या है? Because that function binds the region together. So हमें पता है functional region में क्या होता है कि कुछ functions होते हैं region के, उसके वजह से वो region bind up होता है. It comes together and it works like that. And reasoning is what? Because that function binds these regions together. So because of function only that region is coming together and which holds that much proportion of area together. So your option C, both A and R are correct and R is giving the correct explanation of A is the right answer. अभी next question है identify the correct group, ठीक है. तो यहाँ पे correct जो group है वो है shifting agriculture, जिसमें प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस एंड इट इज़ बेसिकली फाउंड इन अफ्रीका. एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में सॉइल इरोजन का जो प्रमाण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज बर्न, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको. तो बर्न करने के बाद क्या होता है? दैट एरिया ऑफ द सॉइल इट गेट्स एक्सपोज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट है सेकेंड वन का आंसर है सिल्क cloths, woolen cloths, jacket and fish. So this is the answer for second one. Next, third one, film, radio, TV, print. So these are all the communication mediums, technologies, new technologies. Next, fourth one, the Himalaya region, the Alps, the Rockies, the Caucasus. So these are all the mountains. Next one is social geography, political geography, economic geography and historical geography. So these are all the different types of geographies which we can see. Then we have weather, climate, wind and river, ठीक है. So the answer here is all the geography like social geography, political geography, economic geography and historical geography. These are all the geographies which are related to human geography, ठीक है. So the answer here is first option A. Now let us move further with section D, identify the incorrect group. तो यहाँ पे आपको incorrect group को identify करना है. So you have total 4 groups. तो यहाँ पे transport, trade, agriculture, medical facilities. तो here it is totally mixed up. Some occupations are related to primary, some are related to tertiary, ठीक है. So इसके वजह से ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट ग्रुप है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे स्टेप्स, पेरीज, पैम्पास एंड कॉफ़ीज. सो दीज आर
This is one of the incorrect group. Next we have third one. Third one is what? Tokyo, Osaka, Kawasaki and Congo. Congo is a different river basin. So this is again the incorrect group. Next we have fourth one. Knife grinders, shopkeepers, Konkan, Delhi universities. So this is one of the incorrect factor. And in the case of fifth one, we have Konkan, Punjab University, Delhi University and postal services. ठीक है, so these are the option. I mean the option of B का जो option है that is the right answer. I mean incorrect factor. कोंकण, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई. नाउ गिव रीजन्स. गिव रीजन्स में आपको फर्स्ट गिव रीज़न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन. तो इसमें आपको क्या लिखना है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू राइट द थिंग्स. सो क्यों कम है, वेर एवर इट इज़ लेस देन वाई इट इज़ लेस. सो यू कैन गिव द रीजन्स लाइक क्लाइमेट, रिलीफ एंड ऑल दोज थिंग्स. नेक्स्ट क्या है, लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री इज़ एन इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So you can just see, you need to write the proportion of literate population in the country is an indicator of socio-economic development, because all the things are going to lead by that. You will get good employment, standard of living will be high. So all these things are connected with the literacy. Poverty is going to decrease, per capita income will be high. So all these things you need to write. Then we have the third one. The third give reason is lumbering is practiced more in coniferous. Coniferous की speciality क्या है? You can see only one type of species of tree in the whole forest. ठीक है, that is the speciality of coniferous. And in that you have to say that वो ट्री का जो wood होता है that is totally soft which can easily be cut down. So because of that basically lumbering is carried out over there. Next है tertiary activities. नेक्स्ट क्या है गिव रीज़न. टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ सर्विस एंड एक्सचेंज. तो हमें पता है टर्शरी में ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, टूरिज़म है, सर्विसेज है. ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर टर्शरी एक्टिविटीज़. ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वन. सो इट इज़ रिलेटेड टू रूरल अर्बन फ्रिंज. तो रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में आपको यही लिखना है कि इट एक्ट्स लाइक अ मीडिएटर ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, जिसमें दोनों के क्वालिटीज़ होते हैं. रूरल के भी क्वालिटीज़ होते हैं, अर्बन के भी क्वालिटीज़ होते हैं. सो कुछ नेम्स आप दे सकते हो विच आर दी रूरल अर्बन फ्रिंज. नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. सो दैट फैक्टर्स यू कैन राइट लाइक फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट, देन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको एक्सपांसिव और कंस्ट्रक्टिव पिरामिड के बारे में लिखना है. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपांसिव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको लिखना है. नेक्स्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. सो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर आप you can just study it. Third is secondary activity and tertiary activity. Fourth is shifting cultivation and plantation farming. So very important, very important. Definitely इसमें से, इस पेपर में से definitely आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे. This paper is really good. Then we have physical and human geography. Now we have a map. So map आपको you have to draw it like that so you can see how the index is prepared. ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे कैसे बनाया है, अलग अलग तरीके के डिनोशंस you have to take it and you have to write it and the same you have to show. अभी यहाँ पे देखो पनामा कैनल है जो ऑरेंज कलर में है, so it is drawn here. So Amazon river basin. So this is how you are going to denote the map. Next, I read the following graph and answer the following questions. So in which region is the contribution of secondary activity the most? तो यहाँ पे दो regions दिए हैं, secondary and tertiary. ठीक है, जो blue color है वो है secondary and जो pink color है वो है tertiary activities. So you just have to tell region A, region B, region C या फिर region D. ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है. तो ये है उसके आंसर्स.
नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको लिखना है लैंड यूज़ इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में लैंड यूज़ रेसिडेंशियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, रिक्रिएशनल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कमर्शियल. सो दिस इज़ द लैंड यूज़. देन वी नीड टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट the physical factors affecting the location. This question was asked last year ये question पूछा था. So you need to be prepared for this. ठीक है. So these are the points like availability of raw material, water or power supply, labor, transportation. All these things are very much necessary. These are the next answers. These answers you can write on your own. Now the next question here is related to what? It is related to read the following passage. ठीक है, तो आपको passage read करना है and you need to write the answers accordingly. So this is the passage which is related to crude birth rate and crude death rate. ठीक है, तो these are the questions and these are the answers related to the passage. नेक्स्ट है आपको ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम. सो यू हैव टू ड्रॉ अ लेबल डायग्राम. यहाँ पे लीनियर सेटलमेंट का डायग्राम पूछा है, सर्क्यूलर के बारे में पूछा है एंड रेक्टेंगुलर सेटलमेंट. ठीक है, बेसिकली एक ही तरीके के डायग्राम्स दे विल नेवर आस्क. मतलब एक सेटलमेंट के बारे में पूछेंगे, एक पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में. सारे के सारे सेटलमेंट्स के ऊपर डायग्राम नहीं आएंगे. यू विल गेट डिफरेंट डायग्राम्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट. तो इसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है सर्कल वाली जो आपके बुक में है. एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो इसका आंसर जो है ये आप यहाँ से देख सकते हो. दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड वन. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर, द प्रैक्टिस प्रीलिम्स पेपर and its solution. I hope it is clear to all of you. If you have any queries, comment me in the comment section. Thank you for watching. Do subscribe the channel.